स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर डिस्कशन को स्वागतम। मु होची दुलाल पानी, पास्ट चेयरमैन सीआईआई एवं भुवनेश्वर गोल्फ क्लब रो सेक्रेटरी। मो डाहाणपटे बसिचंती मिस्टर अरुण मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट टिस्को द एसीजेड गोपालपुर प्रोजेक्ट। मो बामपटे बसिचंती मिसेस काजरी मिश्रा, एमबीए अर्बन मैनेजमेंट रो हेड एवं डीन ऑफ रूरल मैनेजमेंट एक्सआईएमबी। मिस्टर तपन महांती, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेड एस्टेट्स। ये डिस्कशन को आम आरंभ करवा कहीकि कि स्मार्ट सिटी आमर निजर ओपिनियन कौन आ चाहे ये कि समस्त यही आम चार जन जाक निजर पर्सनल ओपिनियन दौचु, नॉट नेसेसरीली आवर ऑर्गेनाइजेशंस। मु आरंभ करी पचारिकी मिसेस काजरी मिश्र को कि तांको निज भावना रे गोटे स्मार्ट सिटी कौन हवा उपयुक्त। मोर जहाँ धारणा आम ताको दीटा स्तर रे बुझी पारिबा। गोटे हला स्मार्ट सिटी माने कौन, गोटे इन जनरल तार गोटे डेफिनेशंस अच्छी, बहुत लोक तापर लिखिचंती, सेटा गोटे स्तर रे आम बुझी पारिबा। सेकेंड है आमर जो स्मार्ट सिटी मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करछंती, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, तार जो मिशन डॉक्यूमेंट रे को भाव में सेटा प्रेजेंट करा जाय छी। इफ वी अंडरस्टैंड टिके ब्रॉडली, इन जनरल स्मार्ट सिटी रेफर्स टू अ सिटी जो थे आईटी एप्लिकेशंस आर यूज्ड गोटे सिटी को लिवेबल, सस्टेनेबल एवं एफिशिएंट करबा पे। आमर जो स्मार्ट सिटी मिशन से डॉक्यूमेंट हिसाब रे बुझा गले ए बैकग्राउंड रखिकी, ए अंडरस्टैंडिंग रखिकी से मैंने गोटे पिक्चर देइचंती जे आमे किछिटा सहरों को एनकरेज करूछु जे से मैंने गोटे मॉडल पायलट प्रोजेक्ट गोटे अंचल रो नै कि गोटे सेक्शन सिटी रो नै कि डेमोन्स्ट्रेट करिवे व्हाट कुड बी अ स्मार्ट सिटी लाइक। किंतु गोटे पार्ट स्मार्ट सिटी रो सेटा कले अन्य माने तो पुणी भाबिबे आम पे किछि करा गलानी, तेणु पूरा सहर रे भी किछि गोटे इनिशिएटिव निया जाओ। While one section of the city will be fully developed, there is some initiative in the rest of the city. The part that is fully developed is supposed to get an incentive doji for the rest of the city also to be developed in that way. This is the two understandings. May I request Mr. Arun Mishra, Vice President Tata, कि from a corporate angle, आपण कौन भाबुचंती स्मार्ट सिटी हवा उचित? See, what I see smart city is an extension of development of technology over last 2 decades. आगो अलगा अलगा क्षेत्र रे अलगा अलगा differentiated way रे technology development होतुला. We had heard of smart water management, smart power management, IT in universities, IT in offices. जेतबले एबे टाइम आछि when you have internet of things and you have integrated communication technology in which a subbu functions of city can be integrated. Perhaps it is my opinion, it is also coming from aspiration of people who over last 2 decades started living into gated communities where they experience a kind of quality of life which now they want to experience outside that community also. गोटे सिटी भितर से माने चाहते जमी आम गेटेड कम्युनिटी भितर ट्रैफिक मैनेजमेंट होची, सीसीटीवी द्वारा सब नियंत्रण होची, को घरे किए आसिले गले तार पावर मैनेजमेंट जोटा ऑटोमेटेड हो सारे सेम फैसिलिटी कहीं गोटे सहर भितर हो पारनी। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। एबर जो सिस्टम अच्छी सी सिस्टम विगत एत डिकेड्र समवेयर लोकों के भितर गोटे पेन पॉइंट आसुची कि दैट कॉन्टैक्ट पॉइंट इज नॉट दैट मच यूजर फ्रेंडली। क्या गोटे गोटे फॉर्म आने पड़ो, गोटे गोटे पानी पैसा जमा करा पड़ो, गोटे बिल्डिंग प्लान पास करा पड़ो। ऑल द एक्जिस्टिंग सिस्टम्स आर नॉट दैट यूजर फ्रेंडली। लोके एक्सपेक्ट करजमी कॉर्पोरेट वर्ल्ड रे आम कौन से कम करने आम ऑनलाइन जाऊँ, किसी जमा कलु सांगे सांगे रिप्लाई आसला, गोटे ईमेल देलु तार रिप्लाई आसला, टेंडर जमा कलु तार 15 दिन भर डिसाइड हो गला। सिमिलर काइंड ऑफ फैसिलिटी शुड हैपन इवन इन गवर्नेंस सिस्टम इन ए सिटी बिटवीन सिटीजन और गवर्नमेंट भितर।
And third most important aspect is the environment management. Entire solid waste disposal system, water treatment, effluent management system. तासिथरे इंडस्ट्री लेवल रे बहुत डेवलपमेंट हो गलानी टेक्नोलॉजी आसी गलानी समहाउ हमर म्युनिसिपल सिस्टम रे से टेक्नोलॉजी गुड़ा ए जाए इंटीग्रेट करा हेनी परहैप्स दिस इज द टाइम ए मिशन द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा गवर्नमेंट इज होपिंग दैट ए सब गुड़ा इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इम्प्रूविंग कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन या द्वारा गोटे जो इम्प्रूव सर्विस दिया हम अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट ऑफ म्युनिसिपल सर्विसेज improved satisfaction of citizens and faster decision making in governance, and that will be the ultimate goal of a smart city. मुझे रिक्वेस्ट करी Mr. Tapan Mahanti as one of the leading real estate persons as well as an infrastructure person आपण कौन भाबुचंती स्मार्ट सिटी हबा उचित no mo पूर्वर जो मैडम और अरुण बाबू जो कहले they have said the correct thing but तादरे खाली being a real estate player I can add some few points from my area of activities. Smart city, there is a very smart city specific meaning bahar kariba is very difficult. I think from A to Z everything is covered under every kind of services, every kind of facilities can be covered under smart city, be it physical services, be it electronic services, be it government services, education, transportation, workplace environment, health, everything can be covered under smart city. Particularly real estate क्षेत्र में आमे देखुचु smart city माने आजिकली आमको भी कंपेल भी करा होची law has been formulated accordingly. It should be child friendly, it should be physically challenged compliant, good environment, good pollution free living conditions, plus civic amenities. Civic amenities mean infrastructural facility like what Arun Babu said, garbage cleaning system, proper garbage cleaning system, efficient garbage cleaning system, the proper communication system from the living place to the workplace, easy and instant service availability. So those are part of all service of the smart city. Smart city तो कौन से specify करिबा difficult, but it is a huge subject and covers every aspect of human life. स्मार्ट सिटी आपण समस्त कहले कि वन ऑफ द मेजर अंडरलाइंग प्रिंसिपल रहला कि लिवेबल हवा दरकार लिवेबल माने आगुरु आमे जो सब सिटी आता मन को बढ़ुला लोक मैंने बाहर आसुले घर जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता हैपज लेवल रे चलता रोड इनिशियली जो प्लान हो जाता से रही आउ देखा देखा पाचु कि आम आमर ऑफिस आमर घर रहिबा आउ जहाँ आमर दुकान आउ जहाँ शॉपिंग करवा कथा स्कूल कॉलेजेस एगुड़ा सब चारिआडे स्कैटर्ड होकर रोला से जड़े लोक जो आसिक सिटी रहा तो ऑफिस पे गला को 45 मिनट गलानी ट्रांसपोर्ट उपरे प्रेशर पड़ुची तापर जाकि घर को आसला पर शॉपिंग करेंगे किंतु आस्ते आस्ते जो देखा दूसरी जदि गोटे जगार गोटे गोटे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट करी जोटा मिक्सड लेवल रहीकि जदि गोटे घर रहा से घर रहा ऑफिस रहा स्कूल रहा हॉस्पिटल रहा शॉपिंग सेंटर रहा ताहले प्रति नागरिक गोटे तार नित्य सब जो काम अच्छी डेली नीड्स जहाँ अच्छी से जब केवल 4-5 मिनट चलिकी करें ताहले सहर ट्रांसपोर्ट उपरे आ सहर सब अन्य एम्यूनिटीज उपरे बहुत कम प्रेशर कमिज आ पॉकेट्स ऑफ मिनी सेंटर्स विच आपन जहाँ कहते कि वन पर्टिकुलर एरिया डेवलप करा जाऊ जो थे सब एम्यूनिटीज रहा आस्ते आस्ते सेम थिंग कैन बी डुप्लिकेटेड सो दैट 80% ऑफ द टाइम जो लोक रहिले गोटे जगार से निज काम सब से रहिले जिते सांग को देखा जाऊला कि ऑन एनीथिंग स्पेसिफिक ताले गोटे जगह आ गोटे जगह ए टू बी जी ना से ए प्लेस रे सबू अवेलेबल रहिबो प्लस द अंडरलाइंग लेयर रहिबो टेक्नोलॉजी आपन जाऊ कहले आ समस्ते कहउचंती कि गवर्नमेंट इंटरफेस जिते पर्सनल न होइकरी जोठी टाइम लागुची जदि आमे आईटी और ए सब यूज करि पारिबो ताहाले आवर इंटरफेस इज फास्टर एंड रिड्रेसल इज फास्टर सो एटा होची हमर समस्तंकर ओपिनियन स्मार्ट सिटी हवा उचित
मु कहक चाहूँगी ये भुवनेश्वर जमी सबू सहर सबू एंटायर भारत में देखा गला बेलू जिते सब बड़ सहर थिला बॉम्बे दिल्ली बेंगलोर हैदराबाद तांकर पेरिफेरी बहुत डेवलप कला बिकॉज दे वर द मदर सिटीज एंड इनवेरिएबली पॉपुलेशन पहुँचब गोटे सहर को इकोनॉमिक एक्टिविटी पे अब आस्ते आस्ते आवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कमिजिब से सहर उपरे बहुत प्रेशर बढ़िबो आउ सेति पे गवर्नमेंट बोधे भाभी कि आ समस्ते आम जानीचु कि ईच सिटी और मेजर सिटीज जोर से डेवलप करियो विच विल बी एन अ मच फास्टर स्केल से इतिपाई आम भुवनेश्वर कौन दरकार कौन हवा उचित मु आरंभ करी तपन महांती आपन ओपिनियन कि भुवनेश्वर कौन हवा उचित स्मार्ट सिटी हवा पे जहाँ आपन कहले in comparison to other bigger cities आ गोटे आड़ जब चिंता करवा भुवनेश्वर has got couple of advantage in the sense though it is an old city but still as far as population and infrastructure is concerned is a baby city ओडिशा रे भुवनेश्वर एपर्यंत भी हिसाब कले भी as per the last statistics the population is around 12 lakh they are now planning जो 2030 vision document से करते they are preparing the city for a population of roughly around 30 lakhs कहवा माने होची जो गुराक सिटी गुराक ऑलरेडी ग्रो करी जाइए सेठी ताको मॉडर्नाइज ताको टेक्नोलॉजिकली कंपैटिबल करवा जते डिफिकल्ट एठी ये ग्रोइंग स्टेज रे ताको से अनुसार कंपैटिबिलिटी आनिबाटा इज मच मोर इजियर तेणु वी हैव लॉट स्कोप इन भुवनेश्वर बी इट a road infrastructure be it rightly what you said जे बर्तन गवर्नमेंट भी आस्ते आस्ते जहाँ being in the same line we are also interacting with the government बर्तन टिके बेसी थ्रस्ट दिया होची for mixed culture of development आगुरी जहाँ कहते जे रेसिडेंशियल तो रेसिडेंशियल then institutional development is some other place commercial development in a specific area so everybody wants to go to a market means they have to go to unit 2 market so a concept आस्ते आस्ते गवर्नमेंट चेंज करोचंते and they will be more and more encouraging for mixed use of development number 1 number 2 एबे आउट एबे स्कीम बाहर करछन से माने मोस्टली दे आर गिविंग thrust on that is called a TOD transit oriented development so even they are thinking of exclusive corridors where the mass rapid transport system can be developed either BRTS or MRTS can be developed and they will be giving more emphasis of residential development in those corridor so that people's accessibility to the transport system will be much more easier but these are all in planning system it will take time to develop kintu mindset and planning are slowly getting oriented towards that in fact अपन जो कहले slowly I think लोक माने आस्ते आस्ते impatient हेलन कि जते जल्दी हेई पारिबो but physical development takes time physical development takes time so, but we know but the fact is if there is certain amount of aggressiveness by the government and certain amount of thrust by the municipal authorities and the development authorities in fact they should all now become one ताहले ए development जो कहउचंती जल्दी हेई पारिबो मैं now request Mrs. Kajri Mishra to as an urban planner कि भुवनेश्वर कौन हवा उचित आई हैव 3 थॉट्स मिस्टर महांती जहाँ कहते से टेक ऑफ कले फर्स्ट इज आमर जो आप कहले मिक्स डेवलपमेंट पे जो प्रोग्रेसिवली गोटे अटेंशन दिया होची आई वुड लाइक टू ऐड कि इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ अर्बन प्लानिंग and urban planning is a profession now and for the last almost 150 years there is a body of knowledge of understanding ki cities how they grow and what could be done mixed use development was the norm seta noa jinso nuhe till 60s eta gote basic principle thila of urban development ki mixed use development in the center of the city was the best model because traditional cities were always mixed use jete bele सहर सब बहुत बड़ है suburbs बढ़िया को माने because सहर गुड़ा populations बढ़िले suburbs developed and with the automobile and the rapid transit systems that developed in big cities across the world same model टा आसिला
But still, center cities remained mixed use. If we come back to Bhubaneswar, Bhubaneswar is a planned city, one of the few planned cities at the time of independence, Amara. It was developed on the neighborhood concept. What is the neighborhood concept? Ame etole planning patha padhutulu, padhu bi thilu. That's a basic principle that for my daily needs, gote family ro daily needs, परिवा किनिया को जिबे पिला मन को स्कूल छाड़िया को जिबे just regular grocer shops, barber shop, जहाँ दरकार सब दिनिया. It should not be more than 10 minutes walkable distance away. Beyond that, occasional needs जोटा कि टिके बेसी जिनस किनिबे कि टिके more let's say higher level of education पे छुआ माने जिबे, that could be within a certain distance which does not take maybe depending on the transport system, it may not be walkable, but occasionally you can even walk or take a local transport. It is only for very occasional use that you really used transportation systems. Workplace and home was integrated in many places, and the otherwise the workplace should, now this is a principle, should come within the second layer. That is, you should be able to either use your own walk to the own legs, walkability rahiba, nahale short distance transit use karibe. Jitebale suburbanization hela setebale mass transit, and it went together. Mass transit developed, therefore suburbanization developed. But Bhubaneswar started as a new capital city which was designed, therefore it was built on the ideal principles of a neighborhood concept. Kintu jitebale develop kala, and initial years, if you recollect, I am sure sir also will know that the way the plotting was done, the way the layouts were arranged, every unit actually has an area for a small market. A similar pattern re Gandhinagar heithila, tankar bi se sector system achi. Kintu somewhere along the line 80s pare amara eta rahilani concept ta, and more observation re kahibi that the first development outside the BMC area in Chandrasekharpur and BDA and Chandrasekharpur Housing Board colony joguda hela, that was, I think, somewhat of a turning point. Jothre ki we lost our principles somewhere. Second point I would like to make is amara, in fact in India, not just in Odisha, we have been behind the understanding of how cities should be managed and planned. We have been behind the world by about 20 to 25 years. We are now, when we are trying to leapfrog, hochi kona ame piecemeal ideas nahi jauche, but we are not understanding the basic principles. For example, jota before we discussed, all of us had the idea that the citizen connect with government is an important thing. Saharata hela residence karo first. They need, it's like my home. Mo ghare kon hobo, mor adhikar achi kahibara. Therefore, sahara re kon hobo, sahara basing karo. And not sahara basi tole mo kohuchi, mo individual citizen khali kohoni. Of course, individual citizens, but businesses, developers, designers, planners, and the administrators. Samastankara, all are stakeholders, and samastankara voice neki sahara gadhibaku padiba. So those were the two things which, but here just to add, the IT angle comes only after you do your basic planning. Communication technologies, IT is an overlay which can help you manage better, efficiency badhai pariba. But the basic layout and land use, physical layout, how you approach it, how you regulate it, what you do, that's the essence. Mr. Arun Mishra, our देश जो agrarian economy ru urban economy होची because of corporate more employment in corporate levels. आउ सेति पे गाँ आउ rural area ru बेसी लोक आस्ते आस्ते बढ़ीबे शहर को आसीबा पे. आपनकर कोन मंतव्य कि भुवनेश्वर कोन करिया उचित? सी भुवनेश्वर यदि प्लानिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट एंगल मुझे देखी, इट हैज गॉट 3-4 फैसेट्स जोटा को आगर रखिक प्लानिंग निश्चित करा जाउची. वन, इट हैज ए रिच कल्चरल कॉन्टेक्स्ट.
of a old Bhubaneswar with hundreds of years of cultural context. जो cultural context है smart city, modern city हेले भी that should not get lost. That identity is an identity of Bhubaneswar. Bhubaneswar cannot become New York or Bhubaneswar cannot become London. So that identity must be preserved. Second part है Bhubaneswar is flanked by Manchester, which is an industrial hub, Khurda industrial hub, and InfoCity is an IT hub. Now industrial hubs have a typical characteristics of industrial workers where normally the migration of people from the villages will happen. But IT hub is a place where the migration khali village ru habani, migration from other cities will come. Tankara IT hub aspiration is quite different than the aspiration of Manchester or Khurda. Tankara aspiration ru. The population, then you have the another big sector which is jemane government or government linked profession re achanti for whom the capital was created. Tankar aspiration is of a different kind where samane they would prefer to remain in bungalows with surrounded lawns, bigger space, position of power, everything should be reflected tankar community re. Whereas people who are coming IT re, they would prefer a tall high rise jithare dharantu number of floors are dedicated to residence, whereas many floors are dedicated to office. तांकु बिल्डिंग रु बाहरिया पड़बनी से माने लिफ्ट रे जाइकरी पळेबे ऑफिस को पळेबे फिर घरे फेरी आसीबे. देयर इज अनदर सेट ऑफ पॉपुलेशन जे माने कटक रु शिफ्ट करथिले भुवनेश्वर से माने टायर्ड ऑफ लिविंग इन कटक एंड द गलीज एंड ऑल दैट फॉर देम भुवनेश्वर इज एन एक्सपेंशन सिटी आसिले दे गेट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. सेटा को रखी के यही जो माइग्रेशन होची चारि आडू सेटा को रखी के जो प्लानिंग टा करा हबो सितरे सबु सेक्शन रो एस्पिरेशन कैटर करिया पड़िबो इन ए स्मार्ट वे, but also maintaining the identity of Bhubaneswar and its cultural context. Because that cultural context, if that is lost, then Bhubaneswar will just become another city. Then maybe between Navi Mumbai and Bhubaneswar, nobody will find a difference. So that is when we get down at the airport, we understand the smell, the sight, the look of the place is clearly Bhubaneswar. So सेटा को maintain किमिति करावा, that is also an aspect of it. आमे एले डिस्कस कले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे. आम द्वितीय अध्याय रे आमे स्पेसिफिकली डिस्कस करिबा कि भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी जो नंबर 1 हेची एवं तार कौन इंपोर्टेंट पॉइंट्स साइलेंट फीचर्स एवं को गति रे सेटा डेवलप करूची आ इम्प्लीमेंट होची. इम्प्लीमेंटेशन इज द की. धन्यवाद.